I find it very amusing. Why? Because talking of our country, nowhere else, patriarchy is something which defines everything. The gender roles, the functions of the gender, and the disparity. This is all defined by patriarchy. And the patriarchy is so deep down. You look at any structure of our country, political structure, social structure, religious structure, you take any structure and you see that is the patriarchy and is ruling the functions and the rules in all the structures. It's so saturated with this particular thing. And that is what defines. That's the defining factor. So, for an example, a woman, a mother, a wife, a daughter-in-law, all of them also think on the same line because that is what they've learned, that is what they've imbibed. And that is how the gender roles are known, that is how there is the difference in the gender, and that is how there is hierarchy and also power structure. All goes around. That's how I would understand, and I do understand. छोटा सा यूनिट समाज का दिखते हैं वो परिवार है, इंडिविजुअल्स है एंड परिवार है, और फिर समुदाय है, और उसके बाद आगे नेशन बनता है. So all these structures in the society, उसमें आदमी और औरत, और जो अपने आप को न आदमी समझते न औरत समझते, जो हम कहते हैं ट्रांसजेंडर्स, वो सब मिलके परिवार बनता है और सब मिलके समुदाय बनता है, and all these constitutes nation. So how can we devoid of any discourse in our country, in our society, and in our day-to-day life, devoid of any one segment? So जब पुरुष इस समुदाय और इस परिवार और सबके साथ मिले जुले हैं, तो आप मेल मेंबर्स, पुरुष, इन सबको कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि वो भी तो इसका एक हिस्सा, जैसे औरत एक हिस्सा है. वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ बाइनरी, हम खाली स्त्री और पुरुष की बात नहीं करते हैं, हम ट्रांसजेंडर को भी इसमें लाते हैं, तो वहां किसी को तो अलग नहीं कर सकते ना. तो इसमें इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक male members also in the discourse and in this particular understanding that it is the power, the male has a power, and so there is patriarchy. And it's not necessary male has a power. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी. एक परिवार में एक सास है, बहू है, सब है, तो उसमें सास भी अपनी सत्ता, अपना पावर इस्तेमाल करती है, तो वो भी तो पैट्रियार्की है. जरूरी नहीं कि पुरुष ही करता है. तो इसी वजह से ये बात हमें सबको समझने की, सबके तक ले जाने की आवश्यकता है. किसी भी एक सेगमेंट को आप अलग नहीं कर सकते हो, और क्योंकि सब मिलके ही होता है, तो सबकी समझ एक सी ही होनी जरूरी है. बहुत ऑब्वियस है, बहुत साफ है that
जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, सेक्सुअल वायलेंस होता है, आप उसमें अगर देखेंगे, कोई भी व्यक्ति को नहीं लो, अगर जो प्रक्रियाएं होती है वायलेंस की, whatever processes happen in violence, what you see over there is that there is dominance of power, dominance of that power which you get through the society. And what is that? Is the man is the most important being in a family, in the community. And that is where, through that, comes the dominance in regard to the sexual relationship also. And so that is where patriarchy prevails. जो सास भी होगी वो कहेगी, लड़की की माँ भी होगी वो कहेगी कि तुम्हारा पति जो कहता है करता है वो चुपचाप सहन कर लो, या वो मान लो, तुम्हें उसके साथ ही जीना है. तो obviously you can see that kind of power that is coming through a man, a male member. एक पुरुष से जो पावर आता है इस तरह से आता है, क्योंकि वो पहले से एक कहा गया है कि जो पति कहे वो फाइनल है, तुम्हारी अपनी इसमें कोई इच्छा या ना इच्छा ये कोई सवाल ही नहीं आता है. तो that is how I see के it gets to the man, and man is the person who is most powerful by and large, not always, but by. There could be exceptions. This might look very flimsy, मगर छोटे छोटे नॉर्म्स जो है, शादी अरेंज शादी कर रहे हैं या अरेंज नहीं भी कर रहे, तो एक दिमाग में बैठा हुआ कि लड़का लड़की से लंबा होना चाहिए है. दूसरा अनस्पोकन नॉर्म कि अगर वो पढ़ा है, आप भी पढ़ी हो, तो लड़का से ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं होनी चाहिए. थर्ड थिंग, that if a woman is also an earning member and the man is also an earning person, then if the wife is earning more than the husband, then there is definitely a clash between the two. The man doesn't want the wife to be earning more than him. And if there is any such situation, there are always clashes. 99%, 99.99%, there are clashes. What does this denote? बहुत साफ दिख रहा है ना इससे. छोटी छोटी चीजों में से हमें ये दिख रहा है. And that is what makes me think, yes, it is there. And the जो socialization process है, through that, this is what every child imbibes these kinds of norms. And so expectations are accordingly. अगर रास्ते में जा रहे हो या लड़की या लड़का कोई लड़का लंबा छोटा है और लड़की लंबी है, तो जरूर कहेंगे कि ये तो मिसमैच है. I would also want to add on this question, not all classes, but all age groups. It is very important that what is class? Nothing in relation to the subject we are talking about. So I would say that with all people, all segments of society, which includes even children. And if you really want to bring about change, it has to begin from the child.
because this child is the person who will grow up as an adult, and so that kind of mindset has to come to the child. But the child cannot have that mindset on the child's own. So adults have to be prepared. And that comes a part of parenting. And when we talk of parenting, it's not only mother and the father, it's those who are other caregivers around in the family get also involved. So I would suggest that definitely all segments of society, at the same time, inclusive of children, because under 18 children, this is not their subject. That is how it's taken. But when they grow up as adults, they are going to carry the same thing. And that is what we call socialization. And so let's begin from children's perspective also. And when we talk of parenting, as I said, they need to talk about how to help children understand. And that is what can happen only when the adults also can understand. So it's a very vicious circle. Parents are also important, that is, adults are also important, and children are also important and should go as a unit. Young girls, women, allies, allies will include all other gender also, right? I would say just look at yourself. And when you look at yourself, and you don't have to share with anybody, and analyze yourself, reflect. You yourself will see that if I have to change from one thing to the other, it takes me time. It involves बहुत मेहनत पड़ती है. बिना मेहनत, बिना समय बदलाव नहीं आता. बदलाव हमेशा धीरे धीरे आता है, और धीरे आना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति सोच समझ के काम करेगा. आपके कहने से करेगा, इमीडिएटली करेगा, मगर वो बदलाव नहीं है. तो मैं ये कहूंगी, नेवर लूज हार्ट, गो ऑन. और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आने वाला कल, उससे बाद वाला, अगर आप like a spider continue your efforts without losing heart, without losing hope, keep on. और आपकी जिंदगी में नहीं तो दूसरे जिंदगी में भी बदलाव आएगा. वो बदलाव अगर पॉजिटिव बदलाव है, राइट डायरेक्शन में है, तो देयर विल बी अ चेंज. समुद्र ऐसे नहीं बनता है, एक एक ड्रॉप से बनता है. मेरी अकेली से बदलाव नहीं आएगा, मगर मेरे जैसे और सारे लोग इकट्ठे करेंगे तो बदलाव आएगा. सो change is a very slow process, requires a lot of patience, requires a lot of hard work. Or I would never forget this कविता, पोएट्री, छोटी सी. मैं छोटी थी तो हमें हमारे स्कूल में, मेरे गांव में हमें सिखाई जाती थी. और वेरी वेल नोन नोबेल प्राइज विनर एंड लिटरेरी रविंद्रनाथ टैगोर, उनका एक लिखा हुआ था, जो गुजराती में ट्रांसलेट किया गया था. एकलो जाने एकलो जाने एकलो जाने रे, तारी कोई रात ना जुए तो भी एकलो जाने रे. यानी कोई तुम्हारी इंतजार करे ना करे, कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, you go on your own ahead. And that is what I would say, that's the message for every one of us. Okay, go ahead, don't care what happens, but don't lose heart.